What's up squad RGV, this is Tumche Vishakha from Mumbai and welcome to my YouTube channel RiderGirl Vishakha. Well, it's day 11 and July from Leh. So we are all set. आज ज़्यादा बैग नहीं है, आज सिर्फ एक टेल बैग है, सॉरी टैंक बैग जो कि टेल पे चली गई है एंड इसमें मैंने विंडशीटर रखा हुआ है, सिर्फ विंडशीटर ही है. एक शोल्डर बैग ले रही हूँ क्योंकि जो मेरा गोरिल्ला पॉड है वो इसमें नहीं आता है. तो एक शोल्डर बैग में आई एम गोना कीप माई कैमरा, जस्ट द कैमरा एंड आज के लिए लगेज इतना है बिकॉज वी आर कमिंग बैक टू ले. बाय द वे वी आर गोइंग टू केट टॉप टुडे राइडिंग 80 किलोमीटर्स. सी या टाइम बता दो कितना आ रहा है. 7:30 हो रहे, 7:30. 7 o'clock को रोल आउट होना था. वो कब 6:30. अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, बाकी सब ब्रेकफास्ट कर लिया. आई एम स्टिल लेफ्ट. इसको देख लो, ये तो हमेशा गेड़ा पड़ती. हे व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग. ओके, आई थिंक आई एम द लास्ट पर्सन टू एंटर. हेलो, सोए क्या तुम लोग? सो आज ब्रेकफास्ट में there's fruits, there's juice, there's cheese toast. ब्रीफिंग को बुला रहे हैं, हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. Something that I'm breathing, telling me to sleep in. Fix behind my lids like nothing gets done. Living by a bad truth, swallow it like who knew. Marching to the drums like just gotta have a secret. Life is plain peaches, tell nobody my secret. Drowning out the teaching, gotta have a secret. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. No, I can't do that. Alright, so this is like our first checkpost over here, wherein again the documents has to be shown. पहला चेकपोस्ट है, चेकपोस्ट के बाद सीधा आगे जाने का. एंड द रीज़न वाई वी स्टॉप एट द चेकपोस्ट इज़ बिकॉज आप जैसे जैसे किलोमीटर्स क्रॉस कर जितने भी चेकपोस्ट आते हैं, अगर आप खो जाते हो तो आपको पता चलता है कि ये चेकपोस्ट के पास लास्ट इसका डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे, मतलब ये और ये एरिया के बीच में रहेगा. सो दैट्स द रीज़न वी स्टॉप एट ऑलमोस्ट एवरी चेकपोस्ट. सांस फूल रही है. So we are trying to capture a convo and I'm trying to do that from P to say. I'm being the tail and I'm doing that. Convoy. All I go okay. शांति स्तूपा उधर पे, शांति स्तूपा जैन कॉलेज की How can I keep this every day a recess? Hiding my weakness behind my black shades. Life take a range, cause I'm not in shape yet. every day is an oyster. It's like a punch drunk out of this game. Starting by the beaches, gotta have a secret. Life is playing breaches, tell nobody my secret. Drowning out the teaching, gotta have a secret. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. No, I can't do that. तो लास्ट ईयर जब मैंने ये स्ट्रेच किया था, दिस वाज लाइक क्रेजी. ठीक है, यहाँ पर पूरा बर्फ जमा हुआ था, लैंडस्लाइड था, स्नोफॉल था, बारिश था, धूप नहीं था, खाली धूप को छोड़ के सब कुछ था. एंड हम लोग धूप के लिए तरस रहे थे. अभी धूप मिला है, अभी सिर्फ धूप ही धूप है. इतना अच्छा लग रहा था, मतलब द क्लाइमेट इज चिल्ड, थोड़ा सा चिल्ड है बट धूप है. What's up? We are at South Pulu right now. डिम्पल की कल रात की उतरी है? नहीं उतरी है. अभी भी बच रहे हैं. ओके, सो लास्ट ईयर जब मैंने ये किया था
Actually, let me just set the frame proper. I think this frame is nice. So last year का experience मैं share करती हूँ. हम लोग को यहाँ पहुँचते कम से कम I think 1.5 hour लग गए थे. साउथ पुल्लू पहुँचते. थोड़ा मैं ऊपर हो जाऊँ. हाँ. And यहाँ पर जब हम चाय पीने गए थे, वॉशरूम गए थे, वो पीछे जो कैफ़े है, it was snowing over here. यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही थी, यहाँ पर hailstone हो रहा था and बारिश सब एक साथ हो रहा था. Everything what I could see is just white. पूरा white दिख रहा था. Now और I see sun. अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा है. आज सन हाइड एंड सीक नहीं खेल रहा है, आज उसकी ज़रूरत है इसलिए आ गया, हमारे लिए बाहर आ गया है. सो या आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट ले. अगर आपको बर्फ़ चाहिए तो मे एंड जून इज़ द बेस्ट टाइम. अगर आपको बर्फ़ नहीं चाहिए, लाइक यू वांट चिल्ड, ठंडी भी और गर्मी भी चाहिए, तो जुलाई एंड अगस्त इज़ द टाइम टू कम हियर. सांस फूल रही है, मेरी सांस बहुत फूलती रहती है, बहुत खाना खाती हूँ ना इसलिए. खाना वाला चुम्मा चाहिए, लिपस्टिक वाला. हाँ चल. रात को भगवान कसम का सपना देखा है तुम्हारा और एक और लौंडिया थी साथ में. यार देख, मुझे और ऊपर जाना है. ये सब चलते रहता है यहाँ पर. ये सब चलते रहता है. आई एम डूइंग दैट. आई एम एक्चुअली रिकॉर्डिंग. ये चीज़ ना हम गीता को बताने वाले हैं. डिम्पल क्या बोल रही है? अबे पागल है कि ये मत डाल. ये तो जाने वाला है. नहीं, उसे नई गर्लफ्रेंड मिल गई, हम तो बताएंगे. भाई नई गर्लफ्रेंड कौन सी है भाई? अरे भाऊ है यार, भाऊ. और भाऊ को क्या कहते हैं? भाई. 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 आके तो यही बोलेगी. एवरीडे आई कॉल हर भाऊ यार, है कि नहीं? यार ब्रो कोड वाला चीज. हम कौन है? लिपस्टिक लगाती है ना तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता. तो हाँ, तो आई विश कि थोड़ा सीधा साधा हो गया. उससे याद आया अभी इसको लिपस्टिक लगाना आ गया है. Like I think so. या निशा मेरे को सिखा रही है. सिखा रहे हैं हम लोग. तो I can tell you more about her, you know how I feel about her. So ठीक है. It is not about riding. It is about how to put lipstick as well. But Vishakha is damn beautiful, hot and sexy girl. I like her. ठीक है, थोड़ा इधर को. Okay, Vishakha, tell about me. Okay, so when I saw Dimple for the first time, I was like, यार ये कौन बंदी है, पता नहीं यार, कैसी झल्ली टाइप की है. And then later I think after 2-3 days जब मैंने इसका रूम शेयर किया तो I felt really comfortable with her. And I think yesterday I was like, I'm very comfortable. After that sexy dance we did together. यार ये मैंने किया था. ये माँ कसम, ये बाइक की कसम, ये मेरे को खींच के चिपक. निशा अभी यार इसके बाद तेरी सेक्सी डांस किया था कि नहीं? चिपक के डांस हुआ था कि नहीं? कौन सी डांस? चिपक के डांस हुआ था. अरे घुमा रहा था, full not घुमा रहा था. well, it was not about the last night dance. It was about something else. It was about the दिन के बारे में कुछ. It was about the माहौल बन गया था. So माहौल जब सेट है तो ये मैं 1 मिनट आपको मैं अपनी टीचर से मिलवाती हूँ. मतलब हद हो गई, टीचर से मिले नहीं हूँ अभी तक. ऑफिशियल इंट्रोडक्शन हुआ नहीं है. टीचर जी. नहीं, कोई टीचर नहीं है, हमारी टीचर है. पहले शक्ल से लगी थी, घड़ूस पर है नहीं, घड़ूस पर. शी इज वेरी स्वीट. सो सारी गर्ल्स इकट्ठा आई थिंक है बिकॉज ऑफ हर. लेट गोस टू हर. बस अभी 11 पौना है, बहुत बकवास हो गई है. ऊपर जाते हैं. गेट अप जाना है. गेट अप. highest motorable all-weather road in the world, Khardungla top, gateway to such an altitude 17982 feet. Yo bro.
and we are going the same way. Hey. Vishakha. Yeah. Oh my God. I'm from Kerala. Hey, hi. You're from Kerala. Coming from Kerala. K to K. Airtel. Gaadi. Not really. It is rough. Not much power to. Do you mind Manfrotto? Thank you. Thanks. Okay. Alright, I am at K-Top and guess what? I met my squad members out here. Let the flame fill the night. Well, finally, officially, me and my girls, like the entire Himalayan Odyssey, we are here at K-Top, Khardungla top, 18,000 feet above sea level. And last year experience काफी भयंकर था. This time experience is perfect. I didn't see any snow over here. यहाँ पर सिर्फ sand and mountains दिख रहे. I think we rock. So the only snow this year I could figure out is. Yeah, so this is the only snow I can figure out. Little bit of glacier out here. Little bit of glacier out here. Okay. हाँ. तो एक डिमांड आई है, ठीक है, ये दूर दूर तक पहुंची चाहिए डिमांड. कर्मा, क्या डिमांड है? हाँ जी मैम, ये खरदुंगला में एक बोट है, तो एक बोट से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, तो हमारा ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारा ओडिसी वाले हैं सारे 20-20, 50-50 रुपये जमा करके हम एक ओडिसी वालों का अलग सा बोट वहाँ उधर बनना चाहिए, उस साइड में बनना चाहिए, लेकिन बनना चाहिए अगले साल के लिए बनना चाहिए. तो हम लोग ये कष्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हिमालय ओडिसी वाले से 50-20 जो भी इकट्ठा करके हम अगले साल के लिए एक मस्त वाला बोट बनाना चाहते हैं. प्लीज़ करके आप कैमरामैन जो भी है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये एक छोटा सा बोट बनाने का हमारा हेल्प करना. बाकी कर्मा ज़्यादा बोल नहीं सकता है और बहुत बोल दिया बोल रहा हूँ, तो बाकी गलती शलती होगी तो माफ़ी चाहता हूँ ओडिसी वाले की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ. तो खरदुंगला के समझ गए. सो इन शॉर्ट वो बोल रहे थे कि जो खारदुंगला टॉप का बोर्ड है ना वो एक ही बोर्ड है, तो हमको ऐसे और बोर्ड चाहिए बिकॉज इतनी गर्दी हो जाती है यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए. एंड पीपल दे कीप ऑन फाइटिंग कि हमें करना है, फिर जल्दी करना पड़ता है. इसीलिए अगले साल के लिए चंदा इकट्ठा करो और खारदुंगला का एक और 20-50 हिमालय ओडिसी वाले का अलग सा बोर्ड बनेगा, हमारा उस साइड में बनेगा. ये सिर्फ हमारा हिमालय ओडिसी वाले का, जब हमारा कंपनी का ग्रुप आएगा तब खुलेगा उसका वो दीवार, तभी खुलेगा, नहीं तब तक वो कवर नहीं रहेगा. ये भी हो गया. ओह गॉड. ओके, बस हो गया, डन फॉर नाउ. मेरी सांस वापस फूल रही है. सही बोला कर्मा, आइडिया अच्छा है, मजा आया. ये कुछ नया, ये नया था. When we touch then we ignite. Let the flame fill the night. You and me light up the sky. 'Cause we are fire and I am at the world's highest cafeteria, जो बोलना है बोल दो. Last time again I wanted to be here, but इतनी बर्फ थी that I just wanted to just go away from here, just go away from here. But अभी I am enjoying, I am liking it, I am actually enjoying it. So I have ordered hot chocolate and Maggie. आ जाएगा hot chocolate and Maggie. burning, won't put it out, even though we're hurting. Let the flame fill the night. When we touch then we ignite. Well, Khardungla top कर लिया and 12 o'clock को we reached hotel. See the smile on my face. This is the second time I did K-top. अभी बाहर निकले हम लोग. So I've changed. I was just heading out to eat something because I'm very hungry. And ऊपर कैफ़े में ज़्यादा टाइम रुके थे, but भूख लगना फिर से शुरू हो गई है.
It's 9 o'clock right now, and I've come out to the market because my friends, they have pulled me and they've got me out. I am sick. I'm not feeling well. Feverish है. Doctor gave me some medicines, like 3 tablets दिया हुआ है खाने के लिए. I had that and I'm out now to have dinner because room में रह के suffocation हो रहा था and तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, बिगड़ गई थी. So I'm going out again. I don't know whether I'll be able to vlog this properly or end this properly, but whatever I can, I'm gonna do that. Something that I'm breathing, telling me to sleep in. Fix behind my lids like nothing gets done. Living by a bad truth, swallow it like who knew. Marching to the drums like slaying by the beaches, gotta have a secret. Alright, I am back in my room. It's 11 o'clock right now. अभी जितनी फ्रेश मैं दिख रही हूँ, मतलब जितना 50% फ्रेश दिख रही हूँ, उसके -100% I was dead. मतलब मैं इतनी थक गई थी. My thighs started shivering. My eyes were red and I was like a dead body. If you guys have been to Ladakh, okay, via any route, let it be Jammu, Srinagar, let it be Manali, there are very cool signboards on our way. तो अगर आप आए हो यहाँ पर, तो आप में से जितने भी लोग ने साइन बोर्ड्स नोटिस किया है, तो डू लेट मी नो बिकॉज आई डोंट नो. आई मीन आई रेड मैनी साइन बोर्ड्स, बहुत सारे साइन बोर्ड्स मैंने देखे, बट मुझे सब याद नहीं है. सो अगर आप में से किसी का कुछ फेवरेट साइन बोर्ड है यहाँ पर, तो कमेंट डाउन बिलो. आई टेल यू माई फेवरेट साइन बोर्ड. इट्स डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा. This is like my favorite signboard quote, I would say. आपका favorite कौन सा है? Do let me know in the comment section. And as always, this is RiderGirl Vishakha signing off, breaking all stereotypes. Don't forget to fuel your passion and throttle to your destination, because I am fueling my passion and I am at my destination. Yes, I am in Leh. Alright guys, thanks for making me part of it. See you guys in the next vlog. Love you. Bye bye. And don't forget to like, share, comment, subscribe. करना ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है. हमेशा भूल जाती हूँ. ये ब्लॉग में मुझे बोलना है. Keep calm and keep on dark.